So what type of joint is ankle? Ankle? Firstly, compound, because more than two bones are involved. Okay, so ankle, type of joint, compound, modified hinge, modified hinge, articulating surfaces. Articulating surfaces superiorly and inferiorly. Superiorly is the lower part of the tibia and the medial and the lateral part of the medial malleolus, with the articulating surface. Also superiorly is the inner part of the lateral malleolus. Also superiorly is inferior tibiofibular ligament or transverse tibiofibular ligament. So there are three things on the superior aspect. Inner surface of the medial malleolus and lateral malleolus, lower surface of the tibia lower end, and the inferior transverse tibiofibular ligament. And what is there inferiorly? So superiorly, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Lower part of tibia, inner surface of medial malleolus, inner surface of lateral malleolus, and inferior tibiofibular ligament. What type of joint is inferior tibiofibular joint? Syndesmosis. जब हमने फाइब्रस जॉइंट सीखा था तो हमने बोला फाइब्रस जॉइंट is of 3 varieties. What are they? Sutures, composite, and syndesmosis. The inferior end of the tibia and fibula are held together by the transverse tibiofibular ligament, inferior transverse tibiofibular ligament, and that's how they are just held together by a fibrous ligament, so therefore they form a fibrous joint. So this is the fibrous joint. So what is there inferiorly? On the inferior aspect is lateral, superior, and medial articulating surface of the talus. Lateral, superior, and medial articulating surface of the talus. Medial surface articulates with inner side of medial malleolus. Lateral articulating surface articulates with inner surface of lateral malleolus, and superior articulates with lower ends of tibia fibula and the inferior or transverse tibiofibular ligament. Okay? जरा देखो उसमें inferior लिखा है या transverse लिखा है आपके पास? Inferior लिखा, transverse नहीं लिखा है, दोनों लिखा है, inferior भी लिखा है, transverse लिखा है या inferior transverse लिखा है? Inferior transverse. Okay, very good. So this is the articulating surfaces. Then comes the capsule. Capsule. अगर आपको कैप्सूल लिखना है किसी भी हिंज जॉइंट का कैप्सूल, hinge joint का capsule will be always strong on the lateral sides, strong on the lateral sides and weak anteriorly and posteriorly. Strong on the lateral sides and weak anteriorly and posteriorly. Because hinge joint है तो उसको एक यूनिएक्सियल है, एक ही एक्सिस में मूवमेंट होता है. ऐसा अगर उसका मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैप्सूल आप रख नहीं सकते, बिकॉज मूवमेंट नहीं होगा. इसके लिए एल्बो जॉइंट में भी देयर आर स्ट्रॉन्ग, द कैप्सूल इज स्ट्रॉन्ग ऑन द लैटरल साइड्स, वीक एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, सो दिस मूवमेंट हैपेंस. For ankle joint also, these movements to happen, the capsule has to be weak anteriorly and posteriorly, and it is strong on the lateral side. It turns from articulating margins
of the tibia, fibula to talus. Now the ligaments. There are only two ligaments. ये एकदम फर्स्ट क्लास जॉइंट है आंसर लिखने के लिए. There are only two ligaments, medial ligament, lateral ligament. Medial ligament is also called as deltoid ligament. बरोबर? Lateral ligament का कोई नाम लिखा है क्या? खाली lateral ligament. Now the medial ligament के components मैं आपको बता रहा हूँ. Medial ligament में suppose ये lower end of tibia है, ये lower end of tibia. Medial ligament has three superficial, as a superficial component and a deep component. Superficial component has three parts and deep component has one part. So firstly, I am drawing for you superficial components. कैसे याद रखेंगे उसके ऊपर से. Suppose ये posterior part है, ये anterior part है. Anteriorly bone होता है navicular. Okay? So tibio-navicular part. ये मैं medial ligament के ये जो 1 नंबर लिखा है, it is medial और deltoid ligament of the ankle joint. उसके parts बता रहा हूँ, superficial के parts, superficial component के parts. वैसे कि हमारे पास knee joint में we have tibial collateral ligament, deep part and superficial part. So currently we are talking about superficial part of the medial ligament. So there is tibio-navicular ligament. then यहाँ पे नीचे calcaneus होता है. So this is tibio-calcaneal ligament. So anteriorly is tibio-navicular, intermediate is tibio-calcaneal ligament. Calcaneum bone तक जाता है. आपको बहुत बढ़िया कलर का टी शर्ट है, एप्रिशिएट है. Tibio-calcaneal ligament. Then ये जो टैलस है ना, यहाँ पे भी कैल्केनियम के ऊपर टैलस होता है. पोस्टीरियर टिबियो-टेलर, पोस्टीरियर टिबियो-टेलर तीन कंपोनेंट्स हैं. एंटीरियरली क्या है? टिबियो-नाविकुलर. बीच में क्या है? टिबियो-कैल्केनियल. पोस्टीरियरली क्या है? पोस्टीरियर टिबियो-टेलर. मोमेंट पोस्टीरियर टिबियो-टेलर लिखा मतलब कुछ तो गड़बड़ है. क्यों लिखा पोस्टीरियर? क्योंकि डीप कंपोनेंट में, इन द डीप कंपोनेंट देयर इज एंटीरियर टिबियो-टेलर, एंटीरियर टिबियो-टेलर. In the deep component there is anterior tibio-टेलर. Okay? So this is the deltoid ligament. Deltoid ligament of the ankle joint has two components: superficial component and deep component. The superficial component has three parts. Anteriorly tibio-navicular, in between tibio-calcaneal, posteriorly tibio-navicular. Posterior tibio-talar, posterior tibio-talar, and then anteriorly is the deep component, anterior tibio-talar. अभी the deep जो lateral side पे है fibula, lateral side पे fibula. Okay? तो इधर क्या है ना, फिबुला जो है ना हमारे ब्लड, आपके फैमिली में वगैरह बहुत सारे कपल्स होते हैं, मामा मामी चाचा जैसे, हाँ
तो उसमें एक आध कपल ऐसा रहता है जिसमें वाइफ इज सो डोमिनेटिंग कि वो जो आपके अंकल रहते हैं वो पूरा मतलब वो उनका आवाज भी अपने सुना नहीं रहते बचपन, इतना उनको डिप्रेस करके रहता है। फिबुला ऐसा है कि उसका कोई इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं, नी जॉइंट फिबुला डजंट टेक प्लेस। एंकल मतलब ऐसा बोलते हैं कि आपको बॉडी में कहीं बोन की जरूरत तो फिबुला को निकालो और उधर डालो, तो इतना उसका ये। एंकल जॉइंट के लिगामेंट में भी अगर ये जो लिगामेंट्स है तीन, अभी लैटरल साइड पे उसके भी तीन कंपाउंड है, उसके नाम क्या है मालूम है? टैलोफिबुला। मतलब कैसा लगता है? टैलस कितना चिंटू बोलते, टार्सल है, वहां से लिगामेंट का नाम क्या लिखा है? क्या पढ़ो? कैल्केनियोफिबुला। क्या नाम है? और बाकी दो क्या है? एंटीरियर क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर टैलोफिबुलर। मतलब देखो यहाँ पे टेलस है, नीचे कैल्केनियस है, एंटीरियर टैलोफिबुलर। कैसा लगता रहेगा? इसको किसके नाम क्या है? टीबियो 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 पोस्टीरियर एंटीरियर टीबियो टैलम। इसका क्या है? टैलोफिबुलर। एंटीरियर टैलोफिबुलर है ना ये? हाँ। एंटीरियर टैलोफिबुलर, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर। है तो मतलब तो सुइसाइड नहीं कर सकता फिबुलर, पीना पड़ता है उसको ये सब पेन के साथ, क्या करें? ओके और ऊपर से इतना सब होके सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हेट करते हैं, बॉडी में इसकी इज्जत है नहीं, उसको एग्जाम में भी कोई उठाता नहीं, इसका नहीं करता। आधे लोग ऑप्शन में डालते हैं, तो इतना मत करो, तो सोचने का किसी के बारे में। Now what happens is this ankle joint has a tendency to slip and to give, because there are strong dorsiflexors. ये साइड पे सपोज राइट साइड पे there is tibialis anterior, extensor pollicis, extensor pectorum, peroneus, ये बहुत चार स्ट्रॉन्ग ये है, वो खींचते हैं इस तरह से कि ये सपोज टिबिया और फिबुला और ये टेलस है, तो ये ऐसा आगे स्लाइड होगा, ग्लाइड होगा, सटकेगा, घसरेगा, घसरने स्लिप, इट कैन स्लिप। ओके, तो इसके लिए इसमें एक अरेंजमेंट क्या किया है कि ये टिबिया और फिबुला है, इनको पीछे से इंफीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट से कनेक्ट, टेलस को ऐसा बनाया है, ऐसे इंफीरियर पोस्टीरियरली वो ऐसा छोटा है, आगे ब्रॉड है, और ये टिबिया और फिबुला है, और इनको भी पीछे से बांध के रखा है, सो दैट एंकल जॉइंट रिमेन्स स्टेबल। So how ankle joint remains stable is tibia and fibula are connected to each other behind the talus by inferior transverse tibiofibular ligament। बरोबर है ना? ये अगर हमारा टेलस है, और टेलस ऑल्सो एंटीरियर पोस्टीरियरली इज नैरो, एंटीरियरली इज ब्रॉड, तो ये टिबिया फिबुला अगर ये ऐसा होता तो ये दोनों ऐसे स्लिप हो जाते, तो ये ऐसा है, फिर ये दोनों को पीछे से बांध के भी रखो। So these are two factors which maintain the stability of ankle joint and prevent it from gliding। इधर खो गई थी, क्या नाम है तुम्हारा? भूमिशा के बाजू में, हाँ सही।
वो स्लाइडिंग से तेरे को ऐसा तो तेरा कश्मीर का ट्रिप याद आ गया कि कैसे हम उधर गए ऐसे कर रहे हैं और अभी इधर किधर आ गए, हाँ? So that sliding is prevented. Movements happening are only two, flexion and extension. Movements happening are only two, flexion and extension. तो उसके लिए अपन एक मस्त चार्ट बनाएंगे. Of course, इसका blood supply will be anterior tibial artery, nerve supply will be deep peroneal nerve, then tibial nerve, posterior tibial artery will also supply. आजू बाजू के सारे arteries का नाम लिखने का, nerves का नाम लिखने. Okay? वैसा ही है ना? Anterior tibial artery, posterior tibial artery. Movements में मस्त टेबल बनाओ. एक टेबल बनाओ. मूवमेंट कौन सा है, उसका नाम, उसका एक्सिस, नाम, एक्सिस एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट. मूवमेंट्स दो ही है हमारे पास. फ्लेक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज, फ्लेक्शन को नीचे लिखते हैं. फ्लेक्शन इज कॉल्ड एज प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, एंड एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज डॉर्सिफ्लेक्शन. दोनों लिखना. एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज डॉर्सिफ्लेक्शन. एक्सिस दोनों का है ट्रांसवर्स, एक्सिस दोनों का है ट्रांसवर्स एक्सिस. डॉर्सिफ्लेक्शन caused by, बरोबर, एक्सटेंसर हॉलिस्टिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, बरोबर. काय राहिलं आहे का त्याचा कन्शियस दिलाय का, हे काय करोनियस कन्शियस. वो एकदम चिंटू मसल है. चारी मसल. प्लांटर फ्लेक्शन में सबसे पहले नाम किसका है, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस. ओके. तो जिम में जाएंगे और वो एक्सरसाइज करेंगे इधर वेट्स में. हमारे जिम के लोग एब्सेंट दिख रहे हैं. जिम के लोग किधर है? क्रिश, करते हैं ना प्लांटर फ्लेक्शन. प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस, और उसके साथ क्या नाम लेते हैं और है, हाँ, प्लांटर और फ्लेक्सर, हॉलिस्टिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और tibialis posterior. So that is about the ankle joint. So now comes the applied anatomy. क्या लिखोगे applied anatomy? फ्रैक्चर. फ्रैक्चर में एक चीज आप समझिए कि सपोज ये साइड टिबिया है, ये साइड टिब्यूला है, और ये टेलस है, और ये लिगामेंट है. तो ये लिगामेंट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर हम गलती से हमारा पैर ऐसा रखते हैं या ऐसा मुड़ता है, ये लिगामेंट में कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेन होगा, लेकिन पूरा लिगामेंट नहीं ब्रेक होगा. अगर ऐसा हमारा पैर, मतलब दिस इज माय राइट फुट, इफ इट गोज लाइक दिस, ऐसा राइट फुट ऐसा
जैसा हो गया, थोड़ा स्प्रेन होगा, और ज्यादा हो गया तो मीडियल मैल्यूलस फ्रैक्चर होगा। ओके, द मीडियल मैल्यूलस गेट्स फ्रैक्चर, दिस लिगामेंट्स आर सो स्ट्रॉन्ग। या फिर मीडियली ऐसा हो गया तो ये फ्रैक्चर होता है, बट लिगामेंट फ्रैक्चर नहीं होता है, बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग कोलैटरल लिगामेंट्स। सो इन द एप्लाइड एनाटॉमी यू कैन राइट द कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ द ankle are so strong that in case of abnormal movement of the ankle, the ligaments may get sprained, but malleolus gets fractured many times, और उसको POTS fracture बोलते हैं। उसके लेवल्स है, ऑर्थोपेडिक्स में आप सीखोगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, but sprain of these ligaments is very common, ankle ligament sprain, जिसको मराठी में बोलते हैं, अरे उसका टी शर्ट को मैंने अप्रिशिएट करते हैं उसको, इसको मराठी में बोलते हैं पाय मुरगा, मोच आ गई, मोच मतलब वो लिगामेंट स्प्रेन हो गया, थोड़े से फाइबर्स क्लियर हो गए, वो फाइबर्स बाद में, तो थोड़ा दिन आपको क्या करता है, फिर क्रेप बैंडेज बांध के रखते हैं और फिर वो हील होता है, वो हील होता है।